This is a video and this is a cinematic video. So cinematic color grading, which gives your video a crispy, moody and dramatic effect. So how to create it? Today I'm gonna show you how to create a cinematic effect on Premiere Pro. So without wasting any time, let's get started. So this is our footage जिसको आज हम कलर करेंगे. So first I'm dragging it to our timeline, then going to the editing color section, and this is our color section. Make sure your vector scope is on and waveform is on. Okay. Now this is the basic corrections. यहाँ पे saturations को थोड़ा सा down, exposure थोड़ा सा down because of my footage is overexposed. Now contrast, highlights, ये सब आपको अपने हिसाब से adjust करना है. फिर shadows, just because I am wanting this footage into a dark and moody tone. Then blacks थोड़ा सा down, and let's jump into the color wheel section. Shadows almost down, mid tones थोड़ा सा अप करेंगे, highlights को थोड़ा सा अप, and it looks perfect. Then we'll jump into the HSL secondary color section. So first we have to take a adjustment layer here and drag it into our top of the footage. Okay, now take a dropper tool and select a portion जहाँ पे तुमको कलर चेंज करना है. तो मैं पहले यहाँ पे जो पानी का कलर है उसको थोड़ा एक्वा शेड में ले जाना चाहता हूँ. ठीक है, तो कलर ग्रे, मेक श्योर कलर ग्रे इज ऑन, एंड दिस इज द सिलेक्टेड पार्ट्स. Adjust it as much as you want. Okay, fine. Color gray turned off, denoise थोड़ा सा ज़्यादा and blur, ताकि हमारा कलर जो है वो ज़्यादा शार्प ना लगे. Now changing the color from here, the corrections and the color wheel sections. Okay, now it's bit of aqua, bluish tone. Okay, nice. Okay, it's nice. So another adjustment layer, because I want my greenish part to be little bit of orange. Same process, take a dropper tool and pick a selection. Color gray is on. Okay, this is our selected part. Denoise it and little bit of blur, and then jump into the corrections. Color and orangish, yes, cool, fine. So this is our footage, first, second. Okay, तो now यहाँ पे थोड़ा सा जो है सैचुरेटेड पार्ट ज़्यादा लग रहा है ऑरेंज का, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएटिव सेक्शंस पे. यहाँ पे फेडेड फिल्म का जो ऑप्शंस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि जो हमारा क्लिप है वो थोड़ा सा फेडेड लगे. बेसिक करेक्शंस, एक्सपोजर थोड़ा सा अप, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट्स को डिक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, शेडोज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, वाइट्स एंड ब्लैक्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स. ओके, सो नाउ मुझे ये वाला जो स्काई का कलर है वो थोड़ा सा एक्वा टोन में चाहिए. तो अनदर एडजस्टमेंट लेयर, सेम प्रोसेस, go to the HSL secondary, pick a dropper tool and adjust it as much as you want, denoise it
and blur. Now corrections, then थोड़ा सा bluish aqua. Perfect. So this is our footage. Cool. This looks perfect. Okay. So this is our first look and this is our final look. So if you guys like my video, please do like, share and subscribe to my channel. तो see you, मिलते हैं next video में.